हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टैब विद स्मृति। अभी तक हमने जावा लेक्चर सीरीज में बेसिक जावा, देन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो जिसने भी प्लेलिस्ट एक्सेस ना की हो, पहले प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, देन लेक्चर आज का देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सुपर कीवर्ड देखते हैं। तो सुपर कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, ये पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए यूज किया जाता है। जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं विद सुपर कीवर्ड, देन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर सकते हैं विद यूजिंग सुपर कीवर्ड्स। सो यूज कर सकते हैं का मीन्स लाइक इफ वी हैव पेरेंट क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास इन विच वी हैव अ सेम वेरिएबल नेम और वी हैव अ सेम मेथड नेम, देन वी कैन यूज सुपर कीवर्ड with calling to the function, then it invoke the its parent class function. And in case of constructor, we use super keyword, so it directly invoke the parent class constructor. So let's see with example. Super keyword invoking parent class constructor. So create, we need to create two class. First is parent class, and in which initially we firstly we see the example of variable, how the parent class variable we can use in child class with using super keyword. So here we declared a variable int id equal to 25, and like we also create a constructor. So this is our constructor, and we create a child class, child extend parent class. So here we declare a variable with same name but different value, and we create a function public print id, print value. So we create a print value function. Oh, sorry. It have a return type void sound. Then firstly print id, and then in another statement we print super dot id. So जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपर कीवर्ड की हेल्प से ये id जब प्रिंट कराएंगे तो दिस इज द आवर वैल्यू ऑफ सुपर क्लास वेरिएबल्स id which is 25, and this is the child class id value which is 20. Now let's see by running it. मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, अगर आपका फास्ट होगा तो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट दिख जाएगा आपको. Oh, sorry. This is a class function, so we need to call it by creating the object. So either we call from the main methods by creating object, or we can also call within constructor when we create object, then constructor is automatically called. So we need to create child class obj, and we call now we can see that it prints 20 and 25. 20, 20 is a child class id value, and 25 is the super class id, parent class id value. So this is the example for using of variables, how to use variables of parent. Then we can see how to use in a constructor of parent class. And here we create a child class constructor.
So we need to invoke here by using super. So it invoking our child parent class constructor. We don't need to call this child either child or parent class constructor, because whenever we create object, then it automatically instantiate and invoke. We can see that firstly parent class constructor, then child class constructor. There is also a thing that if we don't use the super, then also the parent class constructor invoked, because whenever we extend this parent class in the child class, then judge which is default constructor, it automatically invoke. If we also can create the parameterized constructor in which we pass the parameter and set we can use as we need. And because only default constructor can call automatically, when we create a parameterized constructor, then it need to call through this super keyword. So this is all about constructor calling through super keyword. Then we can call a function. So here we create a void message function. Message. So it print a message for good evening. Sorry, good morning, parent class. And we create a function here. It print good morning child class. So now if we call this inside the constructor, then if we call like a message, then this call the function of itself, like in child class which message function is available. Then if we call, but if we call through super dot message, then it call our parent class function. So we can see by running the program. We can see firstly print good morning child class, because first we call message, then we call super dot message, then child class parent class good morning parent class. So this is all about super keyword. Then we need to we move forward for this keyword. We comment all this code. So this keyword in Java is used for instantiating its current object, like it referring its current class objects variable. Let's see with the example. Like we create a class public class hello, and here we declare two variables like int id equals to, so without any, and string name equals to, and we create a constructor with parameterized constructor, not default. This keyword this dot id equals to id comma this
dot name equals to name. And we can create the object of this. Remove. We can remove this. So let's explain it. So first we create object of this class hello, and here when we create new object new hello, then we pass this argument. Then because I know that we know that it whenever we create object, then it automatically called a constructor. So when we create this and pass this argument, then it called its constructor. So with constructor, how it knows that in which object of class, in which class variables we need to assign it by using these keywords. So whenever we assign the value of this class variable, we need to this dot id. So it indicates that this id variable is class variable and this id variable is function parameter. So this differentiate. If we remove this keyword, then our compiler confused that why we assign this id value into itself. So it's give a warning like assignment to the variable id has no impact, because it thinks that it id itself assigning the value. So this keyword is necessary, but when these parameters name are changed, then we doesn't need to this keyword. So for referring itself, for referring this class means for referring current class of variables, so use these keywords. So थैंक यू गाइस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जावा के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड ओप्स कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और सारा कोर्स देखते रहें। और आगे भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगी, बिकॉज जो हमारी लेक्चर सीरीज है वो बिगिनर टू एडवांस है, तो अभी बिगिनर का सिलेबस चल रहा है। आफ्टर कविंग बिगिनर टॉपिक वी कैन ऑल्सो कवर ऑल advanced topic, and we create we create projects for our preparation. So don't forget to subscribe, like and share. So thank you guys. आपके सब्सक्राइब और लाइक से मोटिवेशन मिलता है फॉर क्रिएटिंग वीडियो फॉर यू गाइस. So thank you. Don't forget to subscribe and फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी देख पाएँ.